Good morning, students. Today we will enter into the next chapter, consideration. Consideration means something in return of promise. Something in return of promise. Now, it is one of the essential elements which supports the contract. Next, we can say that even we can call it as it is the essence of bargain. Next, we can say that agreement without consideration is nadam pactum, means a nude contract, a naked contract without any enforcement, or we can say it is a void agreement. A promise without consideration cannot be enforced in the court of law. कोई भी प्रॉमिस बिना कंसिडरेशन के कोर्ट में एनफोर्स नहीं की जा सकती. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट. देन वी कैन इवन से द टेक्निकल टर्म कंसिडरेशन इज अ टेक्निकल टर्म. व्हाई इट इज अ टेक्निकल टर्म? वी कैन कॉल इट इन अ लैटिन लैंग्वेज क्विड प्रो क्वो. मैडम पैक्टम इज ऑल्सो लैटिन लैंग्वेज. सो क्विड प्रो क्वो मीन्स समथिंग इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस. Now, if a person is promised to do something, he must get something in return. If a person promises to do something, he must get something in return. If he is promising to do something and getting nothing in return, his promise cannot be enforced in the court of law. Now, for this, Pollock has given a beautiful definition. What he says, consideration is a price. Consideration is a price, कीमत. Price at which the promise of the other is bought. मतलब consideration एक price है जिसको देख के हम क्या खरीद रहे सामने वाले से? Promise. Consideration is a price at which the promise of the other is bought. And the promise bought for a value can be enforced in the court of law. वो promise जो हम सामने वाले से खरीदे प्राइस देकर, तो उसकी वैल्यू है ना, इसीलिए उस promise को enforce किया जा सकता है. Next, suppose example will say A agrees to sell his car to B for 50,000. So for both the promises, what is the consideration? For A is getting 50,000 and B is getting car. Both are getting something in return of them, their promises. Now, under Curry versus Musa case, Justice Lush has explained about consideration like this. In the eyes of law, कानून की नजर में consideration valuable है जब क्या होता है, किसी के लिए वो क्या बन सकता है? कंसिडरेशन कैन बिकम आइदर इन ऑफ सम इंटरेस्ट, राइट, बेनिफिट और प्रॉफिट अक्रूइंग टू वन. एक के लिए वो फायदा है, या फिर दूसरे के लिए क्या है? नुकसान, फॉरबियरेंस, नॉट टू डू समथिंग, डेट्रीमेंट, लॉस और सम सफरिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन और suffered और taken. एक के लिए फायदा है या फिर दूसरे के लिए नुकसान है, तो बोलेंगे consideration in exchange of promise. This has to be added to this definition. So let's now move to the next. तो एक के लिए फायदा या एक के लिए नुकसान होना चाहिए. तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. A lends his bicycle to B. A lends his bicycle to B and B promises to return after 8 days. So here B is getting the benefit of getting a bicycle to be used for 8 days. But A is suffering a detriment. Detriment क्यों? He is sacrificing his bicycle for 7 days or 8 days. So this is how one is getting the benefit, one is suffering the detriment. So this is about Curry versus Missar case. Now let's go through the next. Justice Patterson has said about consideration like this. Consideration is
of some value. It must be of some value in the eye of law. Either the plaintiff should get the benefit. Plaintiff मतलब जो पहले कोर्ट जाता, डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट उन्हें कोर्ट जाता. सो प्लेंटिफ वो जो पहले कोर्ट जाता. प्लेंटिफ किसके अगेंस्ट जाता, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. प्लेंटिफ को बेनिफिट होना या फिर डिफेंडेंट को कुछ नुकसान तो भी होना, तो बोलेंगे उसको कंसिडरेशन. दिस इज व्हाट जस्टिस पैटरसन हैज सेड. Here, this particular point we will understand through a beautiful case, two similar cases, but judgments are different. Why we will see. Under this, Abdul Aziz versus Masoom Ali. Abdul Aziz versus Masoom Ali case में एक है सेक्रेटरी ऑफ द मास कमिटी और दूसरा है सब्सक्राइबर या डोनर जो पैसे देना चाह रहा था मॉस्क रीबिल्ड करने के लिए. तो यहाँ पर सब्सक्राइबर ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 500 रुपये दूंगा फॉर रीबिल्डिंग द मॉस्क. ऐसे उसने प्रॉमिस किया. बाद में इसने पैसे दिए नहीं, तो सेक्रेटरी ऑफ द मास कमिटी वेंट टू द कोर्ट अगेंस्ट द सब्सक्राइबर. जब कोर्ट गया तो जजमेंट क्या आया, जजमेंट ये आया कि ना तो सब्सक्राइबर को कुछ फायदा हुआ ना ही सेक्रेटरी को कुछ नुकसान हुआ. इसलिए क्या है वहां पर, वो प्रॉमिस एनफोर्स नहीं होगी. सो दिस इज द जजमेंट. नाइदर द बेनिफिट इज एक्रूड टू एनीवन नॉर द लॉस इज सफर्ड बाय एनीवन. सो द प्रॉमिस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. Similar facts were there under this case, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. यहाँ पर भी ऐसे ही है कि केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में सेक्रेटरी ऑफ द मॉस्क है, मॉस्क कमिटी है और सब्सक्राइबर है. सब्सक्राइबर ने क्या बोला, मॉस्क रीबिल्ड करने के लिए मैं तुमको पैसे दूंगा. जैसे ही सब्सक्राइबर ने ऐसा बोला, सेक्रेटरी हैज स्टार्टेड रीबिल्डिंग द मॉस्क. He has taken action on the based on the promise made by the subscriber. So the secretary has suffered loss or he has incurred some expenses. In this case, to the extent he has incurred expense, जितना भी उसने पैसा खर्चा किया उतने अमाउंट के लिए वो कोर्ट से सब्सक्राइबर से पैसे ले सकता. ऐसा जजमेंट आया. So what do you mean by this is either the benefit should accrue or the detriment or the loss must be suffered. Then only the promise can be enforced in the court of law. So this is what we can understand with this Justice Patterson's definition about consideration. There must be either the benefit accrued or the detriment suffered. That is a must. Now after this, now we will come back to the definition given in the Indian Contract Act 1872. Section 2 subsection D talks about consideration. So here this definition itself will give you all the legal rules related to consideration. So the understanding of this definition is very important. First of all, when at the desire of the promisor means consideration must move at the desire of the promisor. Promisor की इच्छा पर ही consideration move होना चाहिए. When at the desire of the promisor, promising or any other person. Consideration देने वाला कौन हो सकता है, promisee भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. Promisee or any other person क्या has done something or abstain from doing something. मतलब done मतलब past में किया होगा या नहीं किया होगा past में. That is about past tense, done or abstain. और second does or abstains, present tense, present में कुछ कर रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा है. That is present tense, does or abstains. And future tense, future tense में क्या बोलेंगे, promises to do or promises not to do something or abstain from doing something. That is future tense. So promisee or any other person has done something or abstained from doing something in the past. In the present does something or abstains from doing, or
future, promises to do something or not to do something. So this is consideration. This act, abstinence or a return as a act, abstinence or a promise is called consideration for the promise. एक प्रॉमिस के लिए कोई एक्ट या एब्स्टिनेंस या रिटर्न प्रॉमिस क्या बन सकता है? कंसिडरेशन बन सकता है. दिस इज व्हाट अबाउट कंसिडरेशन डेफिनेशन. नाउ consideration can be an act, like for example, A is selling goods to B and C promises that I will guarantee the payment. So I will guarantee the payment is a consideration. On that basis, A has sold goods to B. So this is another abstinence. Here A is ready to go to the court against B and he has the right to go to the court. B says, I will pay you 500, don't go to the court. It is abstinence. It has been agreed and it's a valid contract. Next, return promise. In the sense, A promises to sell goods after 1 week and B promises to give the money after 15 days. So this is exchange of promise for promise is also a valid contract. Now we go through the last part. नीड फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन की जरूरत क्या है? तो लॉ सेज दैट एवरी प्रॉमिस शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन. एनी promises made, voluntary promises, gratuitous promises, generally they are made rashly without any due deliberation. तो सोच के नहीं, सोच समझ के नहीं करते हैं, इसीलिए लॉस doesn't look with a favor that any agreement made, you are getting something in return of nothing. That means, suppose A says to B, I will pay you 100 rupees, but B is doing nothing in return of that. Then A's promise is not supported by any consideration, so A cannot be compelled to do something. So, any promises made without the support of consideration cannot be enforced in the court of law. This is what we understand. In the next class, we will go through the legal rules of consideration. But for this, understand the basic understanding of consideration is very much important. This base will take you to the whole chapter. Thank you.